हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि हम अब अपना वीक 4 पर हैं एंड वी आर जस्ट on our last lecture. Then we would be solving our activity questions and our practice assignments. सो इस वाले लेक्चर में पर्टिकुलरली हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है टेलीफोनिक कॉल. अब इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस बनते हैं क्वालिफायर्स के अंदर, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियली लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. सो मेकिंग अ कॉल. अब कॉल कितने टाइप्स की हो सकती है? कॉल या तो फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई विल कॉल यू hey XYZ, whatever. Like for example, take Namrata. Hey Namrata, how are you? So now Namrata replies something back, and I would say, yeah, for example, if she says, I am good, what about you? Then I would respond something. So while having an informal communication, there isn't a very like limits or something. If we are communicating about something, we just go on communicating. But while having a formal introduction, like formal call, then we say like, I am from XYZ and I want this and that, or whatever you are presenting. So there is a kind of sequence, and there is a kind of way that you are presenting yourself on a telephonic call. Just for example, hi, hello, this is Megha from Air Voice Services. My name is Megha, I am calling from Air Voice Services. How is it going? Good, thanks. What about you? How are you? Great, thanks. What about you? What's up? Not much. The usual. We can't use this in formal. WhatsApp. So this is not something that we're gonna be using in formal, but this is something that we can use, and this is how we should use it. है ना. This is Megha from Air Voice Services is still not better than my name is Megha, I am calling from Air Voice Services. So there is a kind of way while you're presenting yourself on a formal or informal call. So this is how you should present yourself. You should be really clear that this is my professional call. I am not gonna say hey WhatsApp. सो देयर इज़ आज के जनरेशन में, स्पेशली आई वुड से जेनजी जनरेशन है हमारी, तो हम आजकल सीरियसनेस काफ़ी लैक करते हैं, प्रोफेशनलिज्म काफ़ी लैक करते हैं. दैट इज़ रियली अ बिग रेड फ्लैग. क्योंकि हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि हम कैसे प्रेजेंटेबल बने, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेशनली कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं और अनप्रोफेशनली कौन से. प्रोफेशनली व्हाट्सएप नहीं यूज़ होता है. प्रोफेशनली हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं XYZ से हूँ और मुझे ऐसी फ़लानी चीज़ आपसे हेल्प चाहिए, या फिर आपकी क्या हेल्प मैं कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट. बट इनफॉर्मल में वी कैन से व्हाट्सएप एंड ऑल. सो ऑफिसेज एंड इंटर्नशिप्स एंड कॉलेजेस आर नॉट अबाउट इनफॉर्मेलिटी. सो वी शुड हैव दोज मैनर्स टू कॉल अपॉन अ टेलीफोनिक कॉल. उसके बारे में इस वाले लेक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन है. Differentiate between formal and informal phone conversation based on the relationship and context. Start a formal call with greeting and introduction, while informal calls can begin with casual questions. Inquire about availability politely and propose a suitable time for call. For example, अगर मैंने आपको कॉल किया है, ठीक है, मैं कह रही हूँ हेलो मैम और समथिंग लाइक गुड इवनिंग मैम, आई एम आरती एंड आई एम फ्रॉम लेट्स लर्न. लाइक दिस इज़ हाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. तो आप कहती हैं कि ओके, लाइक what I need to do, like whatever you are going to ask me, I will answer in a very formal way. और फिर मैं पूछूंगी like if you say yeah what is the matter, why you called me, something like that, then I would be saying ma'am, if you're available then we can continue. Is it the right time to talk to you? So there are some manners while we are talking formally. Yeah. So while we are talking formally, we greet and then we do our introduction. And in informal calls, we can begin with casual questions. There is no compulsion as such. Inquire about availability politely and propose a suitable time for call. Leave clear and concise message including the purpose of the call and contact details. So this is also very important, how you are going to tell the purpose of the call and contact details.
conduct conference calls by adding participants and ensuring clear communication. Yeah. Address common phone problems such as audio issues and or wrong numbers with appropriate responses. End a call professionally by expressing intent to reconnect or acknowledging the conversation's conclusion. जब भी आप कोई कॉल को डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं, प्रोफेशनली आप बात कर रहे हैं, तो कंक्लूजन दे करके डिस्कनेक्ट करें. ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है और आपने तुरंत काट दिया. नो, दैट इज़ नॉट द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर्मली. तो आप कंक्लूजन दीजिए, देन यू से कि हाँ ठीक है भैया हो गया, एंड देन यू कैन मूव अहेड. विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड ऑल आर 4 वीक्स. एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दें अगर आप क्वालिफायर्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, कि लाइव सेशंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली फॉलो करें और मॉक टेस्ट भी दें, और ईच एंड एवरी वीडियो अगर आप देखते हैं लेट्स लर्न पर और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आईआईटी मद्रास के कंटेंट को भी गो थ्रू करते हैं, then definitely you will get admission into the course with good marks. And I wish you all the best and keep preparing well. और अब हम एक्टिविटी 4.6 कर लेते हैं. So like we have activity 4.6 and then we have practice assignments, and there we we are done with the week 4. So I think we can cover it in the next video. Till then stay tuned. एंड आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हो अगर आप इस वीडियो तक आ गए हो, और बहुत अच्छा करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.